we are here back with another power pack session on legal current affairs. तो लास्ट वीक जितनी भी चीज़ें हुई उनको हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी नई चीज़ें हुई हैं. दीज आर वेरी लैंडमार्क थिंग्स जो रिसेंटली कवर करी गई हैं. सारे जजमेंट्स मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैड हैपेंड इन लास्ट वीक. द मोस्ट 3 important थिंग्स जो हमको जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो वी ऑलरेडी नो स्ट्रे डॉग्स के पीछे लास्ट ईयर कितना बवाल हुआ था, and we already have seen people protesting about the same, people talking about the same all over India, right? कि there should be certain kind of guidelines to कि ऐसे ही नहीं उठा सकते हैं, ऐसे ही नहीं, they can go and kill the stray dogs, right? So what should be the measures that they can do? So what happened that this case was taken suo motu by the court itself. Okay, nobody filed the case at the court, right? So what did court suggested at that moment of time? That they should be kept under, they should be given the sterilization for some time, right? Now what court is saying is कि how it begin, we should know that कि animal birth control के accordingly there was a lot of stray dogs that were increasing, right? So reports के according 1084 dog bitten cases बढ़ गए थे. And specifically in Delhi there are a lot of cases which were reported being bitten by stray dogs, right? उसके बाद many children were affected, many children were suffering, ठीक है. और there were काफ़ी facial injuries हो रही थी, कोई limb गायब हो रहा था, ठीक है. बच्चे गायब हो जा रहे थे. So what all things reported at, also there was incident that reported at international IGI airport, right? Indira Gandhi International Airport. So airport पे भी चीज़ें होने लगी. तो airport is a public place, right? वहाँ पे भी चीज़ें noticeable हुई, right? Then there was some foreign person also who was bitten by the dog in Surat. So all these things started happening. So what did the judgment happen in May 19, 2026? What did court actually said? उन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं. The magnitude of the problem and the resultant threat posted to public safety has assumed deeply disturbing proportions. That is what court has said, right? Also reflecting a continuing and widespread pattern of attacks resulting in severe physical injury, psychological trauma in several cases, loss of human life, right? Then we can see that is euthanasia permitted. Court ने बोला कि euthanasia permitted रहेगी with respect to the dogs. Authorities may euthanize rabid or dangerous dogs wherever necessary to protect human life. So किसको euthanasia करना है, किसको करना है? That is rabid जिनको होगा rabies basically, or wherever there is a dangerous dogs, wherever there is a necessary things to accommodate. AWBI SOP upheld. The Animal Welfare Board of India standard operating procedure to be upheld in full. जो हमारा एक prohibition of cruelty towards animals का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, right? Then challenges dismissed. All applications seeking recall of the November 7, 2025 directions were dismissed outright. तो उन्होंने जितने भी challenges आ रहे थे उनको dismiss कर दिया, right? These are the major things जो हमारे कोर्ट ने बोली with respect to the same. And ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके हर स्ट्रे डॉग को मार सकते हैं. और ऑल्सो पब्लिक प्लेसेस से भी स्ट्रे डॉग्स का आना जाना बंद कराया गया है, राइट? मेजरली रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, ऑल दीज प्लेसेस, स्कूल्स हो गए, एनी पब्लिक प्लेस वेयर इट इज़ harmful for the human being with the harmful dogs, right? Moving on, liability infrastructure and monitoring. Officials protected but accountable, right? No criminal proceedings ordinarily initiated against implementing officials, but continued non-compliance may trigger contempt. तो non-compliance होगा तो contempt trigger होगा, disciplinary action है, tortious liability आ जाएगी, right? Then feeders, जो भी feed कर रहा है, so they have also said कि जो भी feeders होंगे वो उनकी खुद की इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर उस डॉग ने जाके किसी को बाइट किया तो फीडर्स शुड बी लाइबल फॉर हूसोएवर दे आर फीडिंग, ठीक है. आर्टिकल 21 was invoked. Right to life with dignity encompasses right to live free from dog bite threats, ठीक है. तो ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे यू आर नॉट इन अ
यू नो यू आर नॉट इन अ फियर ऑफ लिविंग दैट यहाँ पे आपको डॉग बाइट कर लेगा. स्टेट कैन नॉट रिमेन अ पैसिव स्पेक्टेटर. तो यहाँ पे दे हैव टू बी वेरी एक्टिव इन दैट वे. इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट मस्ट एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन फुली फंक्शनल ABC सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट. सो दे हैव सेड कि हम पूरा ABC सेंटर बनाएंगे पर डिस्ट्रिक्ट स्केल टू स्टेट population density and ensure sufficient anti-rabies vaccination supply. ठीक है. हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग होगी. ऑल हाई कोर्ट अक्रॉस इंडिया वर डायरेक्टेड टू मॉनिटर कंप्लायंस थ्रू suo motu proceedings. सो यहाँ पे suo motu proceedings के थ्रू दे हैव टू बी monitoring such things with clear warnings of consequences and erring may erring municipal and administrative officials. Right. Moving on. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि BCCI भाई पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं. अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो हम उसके खिलाफ RTI नहीं कर सकते. हम ये कभी जान ही नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर कैसे आया, क्यों टीम बनी, कैसी टीम बनी, कैसे हुआ. सो वी कैन नॉट नो अबाउट द सेम. राइट. सो अगर BCCI पब्लिक अथॉरिटी होता तो वी कुड हैव बीन नोन थ्रू इट RTI. सो व्हाट हैपेंड कि देयर वर पीपल हु वांटेड टू नो सच थिंग्स एंड this ruling came into picture in May 18, 2026. So control of the cricket in India does not qualify as a public authority under the RTI Act, resolving a dispute that originated with the 2017 application. ठीक है. So RTI का dispute की timeline बताते हैं. 2017 से this started. गीता रानी filed RTI seeking कि BCCI select national players कैसे. ठीक है. 2018 CIC declares BCCI as a public authority because they choose Indian team. Indian team is wearing what? Tricolor thing, and also they are playing for the India, right? Where is India names on jerseys, right? September 2025, they said Madras High Court remits the case to the CIC for fresh reconsideration, and May 2026 they came up that it came up in the favor of BCCI, stating the board does not meet the statutory definition of a public authority. So यहाँ पे पूरा deny कर दिया गया कि BCCI तो does not form a public authority. तो आप इसके ऊपर RTI कैसे फाइल करोगे. ठीक है. तो that is what happened. क्यों नहीं आता BCCI? So कुछ सेक्शन जितने हमारे पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं. So that is an exhaustively definition. तो वहाँ पे it means वो ये नहीं बोलती, जो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन है वो means बोलती है, वो include नहीं बोल रही. अगर include बोल रही होती तो हम इसको illustrative मानते. वो तो means बात कर रही है, right? तो मतलब वो सारी चीज़ें उसके अंदर included हैं. तो this means this. दैट इज इट. वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं. उसके अलावा वी कैन नॉट इंटरप्रेट इट. अगर वो बोलते इंक्लूड्स तो हम चीज़ें उसके अंदर इंफॉर्मेटिव रखते, इंक्लूड करते, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते. ठीक है. नॉट क्रिएटेड बाय स्टैच्यूट, तो स्टैच्यूट के थ्रू नहीं है. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और नो सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग है. ठीक है. द की पैराडॉक्स वॉज BCCI मीट्स नन ऑफ द RTI एक्ट क्राइटेरिया फॉर पब्लिक अथॉरिटी. तो RTI एक्ट के अकॉर्डिंग ये पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, तो हम इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, RTI फाइल नहीं कर सकते. Selecting players representing India internationally and operating at a scale of enormous public interest. The Lodha Committee and Law Commission recommendations on transparency were characterized as advisory only and not as overriding statutory provisions. A separate sports transparency framework for large private bodies performing national level public functions may be legislative path forward. Moving on, SC modified order on NCERT academicians. So you remember there was this whole chapter on judiciary system where judges came up and said, okay, this is defamatory towards us and we should remove this chapter. Also they punished all the academicians involved into this. So they punished 3 people, and they also said all the academicians involved should not be other universities should not take them. They should be aware about the same. They are prohibited to work with them.
तो अभी वो जो 3 अकेडमिशियंस थे, दे केम अप विद देयर ओन थिंग कि हमको भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी, यू नो, हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो वर्क, राइट, दैट इज आवर यू नो पार्ट कि हमको काम करना है. सो व्हाट हैपेंड हियर in Feb 26, Supreme Court imposed a blanket ban on publication, reprinting or digital decimation of the NCERT class, right? 8 social science textbooks containing content on judicial corruption. ठीक है. Then March 11, 2026, court directs all government bodies, publicly funded institutions to disassociate from Michael Danino, Suparna Divakar and Alok Prasad Kumar forthwith. So these are 3 people जिनके खिलाफ, you know, they said they should, no institution should work with these academicians. April 2026, the 3 academicians moved to the Supreme Court, arguing that the drafting was a collective process. भाई draft कर रहे थे तो it was not just me who was drafting. कोई भी चीज़ draft होती है तो देर आर सर्टन लेवल्स ऑफ इट टू बी पब्लिश्ड, राइट. एक छोटी कमेटी बना रही है, फिर उसके बाद इट इज़ गोइंग टू बी रिव्यूड एंड देन फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड. सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट यू फॉलो. आप ये नहीं बोल सकते कि किसी इंडिविजुअल ने ही किया है, राइट. दे हैड सिग्निफिकेंट क्रेडिबिलिटी इन देयर फील्ड्स. ऐसा भी नहीं था कि दे आर नॉट द वेरी फेमस पीपल, राइट. दे आर द पीपल वेरी वेल नोन इन देयर ओन फील्ड्स, राइट. May 2023-2026, bench of CJI Surikant recalls the findings of deliberate misrepresentation and withdraws the disassociation directive against the academicians. What did CJI came up with the picture कि we should put this down कि जो भी इनके ऊपर इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने के लिए restrictions लगे हुए हैं they should be put down, and लेकिन जो भी deliberate misrepresentation हुआ है वो उसको they are not going to put that down, right. Moving on, what changed and what didn't? Finally, the 3 academicians had deliberately or knowingly misrepresented facts. Directive to all government institutions to disassociate from the academicians and academic activities. Government and institutions are now free to independently decide on association. Still standing, blanket ban on the class 8 NCERT book, जो अभी भी stand करेगा. NCERT apology stand on record. Expert review committee headed by Justice Indu Malhotra continues overseeing the rewritten chapter. Court reiterated that the curriculum was wholly undesirable and unnecessary. वो curriculum ही undesirable और unnecessary बताया, and then they illustrated court capacity to separate content objectively from individual culpability, a significant procedural classification. So the key takeaways across all the 3 rulings. Public safety over inertia. The stray dog ruling signals that Article 21 imposes an affirmative duty on the state. Passive inaction in the face of documented harm is constitutionally impermissible. Also, they said statutory gaps in accountability, जो BCCI की ruling exposes a legislative lacuna. एक बहुत बड़ा loophole है, ठीक है. And the RTI's Act exhaustive definition leaves powerful private bodies performing national public functions. So this is a loophole, right? There should be certain rules and guidelines that should come into picture. Entirely outside transparency obligation. Then we have judicial recalibration, where NCERT modification demonstrated the court's willingness to revisit its own findings, ठीक है. Also, when procedural fairness demands it without abandoning its substantive position on the content itself. Also, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे the judgment was against Audi Ultram Partem. यहाँ पे राइट टू हियर दिया ही नहीं गया, ठीक है. सो दिस इज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कीप अ नोट ऑफ. That is it from my end. I hope you really like the video. Do like the video, share it with your friends, subscribe the channel, and keep watching it on Monday 5:30 p.m. So don't forget to watch it. Okay.
ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।